The third theory, that is clonal selection theory, which was proposed by Frank McFarlane Burnett in 1957. And the concept is that each lymphocyte bears a unique receptor for a specific antigen or epitope or antigenic determinant. Upon encountering its specific antigen, that lymphocyte is activated and clonally expands to produce effector and memory cells. This is the foundation of modern adaptive immunity and explains the specificity, memory, and self-tolerance. And we know that the specificity, memory, self-tolerance are the attributes of the adaptive immunity. तो इसमें कंसेप्ट में है कि हमारे पास मैकफार्लान्स ने 1953 में प्रेजेंट किया, और बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो पॉल एरलिख की जो थ्योरी है सिलेक्टिव थ्योरी, उसकी एक मॉडर्न फॉर्म है। तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास इम्यून सिस्टम हमारा के स्टेम सेल्स हैं, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, और हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो हैं वो उनमें जीन रीअरेंजमेंट्स होंगे और नए नए जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे और नए नए बी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, और देयर विल बी अबाउट 10⁸ different types of B cells, which each one will have different idiotype or antibody on it, which will have a specificity for a specific epitope to bind with. तो इसमें है कि हमारे पास मेच्योर बी सेल्स हैं, मेच्योर सेल्स हमारे पास जब प्रोड्यूस होंगे तो they will be about 10⁸ 100 million different types of B cells. It means 100 million different types of antibodies producing B cells will be produced. Each will have a specific antibody, and of course the number of antibodies will be about 500,000 on each cell. But all the antibodies on a cell should have the same the same antibodies, which will be specific to bind with a specific epitope. So when by chance some antigen or immunogen come and it contact that a specific B cell, it will be selected, its clonal selection will take place, and it will start to proliferate in number, it will start to increase in number, and rest of the cells which will not be selected, they will die away through the process of apoptosis. So then after this, when it will be activated due to binding of antigen, then it will proliferate, it will increase in number, and they will produce memory cells, and it will produce plasma cells. And these plasma cells will produce about 2000 antibody molecules per second. Enormous amount of antibodies will be produced, and it will live there. तो ये वही रहेगा जब तक कि इसने हमारे पास थ्रेट रहेगा, एंटीजन रहेगा, इम्यूनोजन रहेगा, तो जब तक वो एलिमिनेट नहीं होगा तो ये बी सेल रहेंगे। और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल्स हैं तो इन सेल्स को जब ज़रूरत नहीं रहेगी तो इसको मेंटेन करना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए इनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, इनकी डेथ हो जाएगी। तो ओनली मेमोरी सेल्स विल बी लेफ्ट, और फिर कभी कोई हमारे पास थ्रेट आएगा तो फिर ये मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज सीक्रेट होंगी प्लाज्मा सेल्स से, और वो जो हमारे पास थ्रेट होगा उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। तो आई थिंक जो हमारे पास out of these three theories, that is selective theory, instructional theory, and clonal selection theory, clonal selection theory is the best theory, and it is accepted by scientific community, and there are experimental support for it. For example, this production of monoclonal antibodies, it is strong support, experimental support for this clonal selection theory. Thank you.